dear Ramnees. My India, my pride. We are here to celebrate 75th Independence Day. Wish you all a very happy Independence Day. The order of the program is flag hosting, national anthem, band, followed by prayer service and the cultural activities in the auditorium. Now I call upon respected Colonel Harish Chandra to please host the flag. Principal, St.Mary's, respected teachers, guests who are here today, parents if any, and last but most importantly, all the students of St. Mary's. Well, students, I'd like to tell you that I am also a Ramneeite. I was here in 1951 for 2 years, then we moved to St. Joseph's. Independence Day today has a very, very significant motion for us because it is the 75th day, the Amrit Mahotsav as they are calling it. Well, I was born in 1946, 1 year before the independence, and what I do remember in the last tremendously, after 75 years, digitally we have progressed, and mechanically we have progressed, industrially we have progressed, defense we have progressed. So progress is all around. Look at our sports people. Recently in the Commonwealth Games, we got 63 medals, the highest so far, which included 22 gold. So that is progress. And now the progress rests on your shoulders, young students. You have to keep the burden of this country on your shoulders when you grow up and pass out from here. And the onus of progress will lie on you. So choose your leaders carefully. Choose who can lead the country carefully. Don't just choose anybody, because politicians, as you know, they have a different agenda by itself. So, with these words, I'd like to thank Sister Manjusha and others over here for inviting me, giving the honor to address you. Just remember, children, that whatever religion you are, we are basically independents. And I wish you a happy Independence Day. Thank you very much. कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय महोदया, रेवरेंड सिस्टर प्रतिमा, प्रधानाचार्य महोदया, रेवरेंड सिस्टर मंजूषा, शिक्षक जन, कर्मचारी जन व मेरे प्रिय साथियों, आज हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस के पावन उत्सव को मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। वे भारतीय सैनिक ही हैं जिनके जज्बे की अलग ही गाथा है, तभी तो दुश्मनों का कलेजा इन्हें देख थर थर थर्राता है। भारत देश का गौरव है ये, तिरंगा भी इन्हें देख मुस्कुराता है, तभी तो ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर यह शान से लहराता है। Today we feel honored and privileged to have Colonel H.C. Shah as the chief guest of our Independence Day celebration. Sir has served as an instructor at the National Defence Academy, Pune. In 1971,
he operated in the liberation of Bangladesh and also received the Bravery Commendation for anti-insurgency operations. In 1984, he operated in the 1st Battalion to ascend Siachen Glacier. He was also involved in border operations for 3 years and also served as the Deputy Brigade Commander in Infantry Brigade and Education Officer in Jat Regimental Center. Sir has also been involved in multiple मैं माननीय मुख्य अतिथि कर्नल एच.सी. शाह व हमारी प्रबंधक महोदया रेवरेंड सिस्टर प्रतिमा व हमारी प्रधानाचार्य महोदया रेवरेंड सिस्टर मंजूषा को दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मेरे पति की मृत्यु के पश्चात मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो मैं अपनी जान से अंग्रेजों के हवाले कर विधवा का रूप धारण कर लूं, या अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर अपनी झांसी की रक्षा के लिए अपनी मृत्यु को अपने गले लगा। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने अपनी झांसी अंग्रेजों को ना दी और मैंने विधवा का रूप धारण न किया, क्योंकि मुझे मेरे राज्य की रक्षा करनी थी तथा मैं झांसी के लोगों को अनाथ नहीं छोड़ सकती थी। मुझे अभी याद है, उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरे शरीर में रक्त होगा तब तक मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की रक्षा करूंगी। दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना को लगा कि आज झांसी को हथियाने का बहुत अच्छा मौका है, परंतु वे नहीं जानते थे कि एक स्त्री क्या कर सकती है। मैंने ठान लिया था कि मैं उनको अपनी झांसी की 1 इंच भूमि तक न दूंगी तथा मैंने झांसी की सारी बेटियों को एक सिपाही के रूप में तैयार करा और हमने युद्ध करा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मना सके। मैंने जीते जी अंग्रेजों को अपनी झांसी छूने तक न दी और मैंने अपना सपना पूरा करा। मैंने वो चिंगारी बनकर दिखा दिया जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर रहेगी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। आपको पता है ये पंक्तियां मेरी ही वीरता में लिखी गई है। मैं अग्रणी अध्यात्म, थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला हूँ। मेरा जन्म 1 अक्टूबर 1847 लंदन के कलकम में हुआ था। मैंने भारतीय लोगों के अंदर आजादी की भावना जगाने का काम किया। मैं भारतीय मूल की नहीं हूँ। मैं ध्यान से देखा और पाया कि भारतीय लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से दूर रखा जा रहा है। यह देख मेरा मन करता है कि भारतीयों के लिए लड़ने का। मैंने ब्रिटिश के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश का नियंत्रण कम करने के लिए धूम्र नदी की भी स्थापना। बाल गंगाधर तिलक के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत के स्वराज का समर्थन किया। सरकार की कड़ी आलोचना व विरोध के कारण मैं कई बार जेल हुई। इस बीच मैंने भारत में रहकर कई कुरीतियां जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, जातिवाद जैसी कुरीतियों को कम करने की कोशिश की। मैं ब्रिटिश नागरिक, इसलिए देशद्रोह के आरोप में कई बार जेल गई। मैंने महिला अधिकारों की आवाज बुलंद। यह मेरा भारत के प्यार भी था कि सन 1933 में मैंने चेन्नई में रहकर दुनिया को अलविदा कहा। आज भी वहां चेन्नई की कुछ दूरी पर मेरे नाम पर बेसिन गांव बसा। मेरा नाम सिस्टर निवेदिता है।
और 1898 को मैं भारत आई। मानव प्रेम और सेवा भाव मेरे मन में इतने बसे हुए थे कि मैं अपना देश छोड़कर भारत आ गई। मैं स्वामी विवेकानंद से इतनी प्रभावित थी कि मैंने उन्हें अपना गुरु और भारत को अपनी कर्मभूमि बना लिया। मैंने स्वतंत्रता क्रांतिकारी अरविंद घोष के साथ संपर्क में रहकर राष्ट्र आंदोलन में अपना समर्थन दिया। सीधे तौर पर मैंने किसी भी राष्ट्र आंदोलन में भाग नहीं लिया, किंतु मैं देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर युवाओं को प्रेरित करती थी कि वे भी राष्ट्र आंदोलन में भाग लें। मैंने भारत में शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए कई बालिका विद्यालय खोले। मुझे याद है जब ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम के गायन पर रोक लगा दी थी, तब मैंने इसे अपने स्कूल में जारी रखा। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की क्या दिशा दी जाए इस पर चर्चा करने के लिए कई बुद्धिजीवी और क्रांतिकारी मेरे घर में एकत्रित होते थे। मैं भारत की पहली महिला हूँ जिसने सबसे पहले भारत के ध्वज व प्रतीक का डिजाइन किया। मैंने प्लेग महामारी के दौरान बिना अपने जीवन की परवाह किए कई मरीजों की सेवा की, जिसके कारण मैं मलेरिया की चपेट में आ गई। मुझे गर्व है कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की रक्षा करने में समर्पित किया। मेरा जन्म 25 जून 1908 को हरियाणा के अंबाला में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैं गांधी जी के विचारों से प्रभावित हूँ। मैंने गांधी जी के साथ मिलकर कार्य किया है। मैं अरुणा अली और उषा मेहता के साथ शुरू करता। देश के सियासी माहौल का पारा चढ़ा हुआ था। आजादी के मतवाले गांधी जी पुणे के आगा खान पैलेस में उपवास रख रहे थे। एक समय में उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई। उस समय में 34 वर्ष की थी। मेरे और स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा रहे थे, जिस कारण मुझे अंडरग्राउंड होकर अपनी गतिविधियों को जारी रखना पड़ा। गांधी जी के स्वास्थ्य के बारे में सुनकर मैं बहुत बेचैन थी। मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं गांधी जी से आग्रह की। मैं श्रीमती कृपलानी हूँ और मैं गांधी जी से उनके उपवास स्थल पर भेंट करना चाहती हूँ। आप मुझे उनसे भेंट करने की अनुमति दें और जब मैं वापस होंगी तो आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। के अंदर शहर छोड़ना होगा। इस प्रकार की कई गिरफ्तारियों से भयभीत हुए बिना मैंने आजादी की लड़ाई में अपना सक्रिय योगदान दिया। मैं केवल नाम से ही स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, बल्कि मैंने तो अखाड़ी में दंगों के समय गांधी जी के साथ वह मोर्चा भी संभाला है। जब देश का विभाजन हुआ तब मैंने गांधी जी के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए। आजादी के बाद देश राजनीति से संन्यास ले लिया और साल 1974 में मैंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मैं अरुणा अली। मेरा जन्म 16 जुलाई 1909 कालका पंजाब में हुआ था। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहीं नैनीताल से की थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मैंने बहुत से आंदोलनों में भाग लिया, जैसे नमक सत्याग्रह के दौरान मैंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया। उस समय जुलूस निकालने की सजा कैद थी। इतना देख अंग्रेजों को झुकना पड़ा और मुझे रिहा कर दिया गया। आगे चलकर मैं तिहाड़ जेल में गई। वहां रहकर कैदियों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ मैंने भूख हड़ताल की, जिससे अंग्रेजों का कैदियों के प्रति व्यवहार बदला। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, जिसमें मैं एक सक्रिय प्रतिभागी थी। 9 अगस्त 1942 का देश की आजादी का एक महत्वपूर्ण दिन था। मुझे आज भी याद है, उस दिन सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। ऐसे में मैंने गजब की दिलेरी दिखाते हुए ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया, जिससे देश के युवाओं में आजादी का एक नया जोश लगा और एक नई क्रांति शुरू हुई। ऐसे में अंग्रेजों ने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया और मेरे ऊपर 5000 रुपए का इनाम भी रखा। गिरफ्तारी से बचने के लिए मैं अंडरग्राउंड हो गई और वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का भाग बन गई, किंतु कभी अंग्रेजों के हाथ न आए। इस समय मुझे गांधी जी ने पत्र लिखकर सरेंडर करने को भी कहा, किंतु मैं अपने निर्णय पे अटल रही।
आगे चलकर मैं स्वतंत्र भारत में दिल्ली की पहली मेयर बनी और मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे सर भारत रत्न का ताज सजा। महफूज रहे तेरी आन सदा जान मेरी रहे ना रहे।
and honor to stand here before you today on behalf of my father, who unfortunately had to rush to another function today. I would like to speak a few words as the daughter of an army officer. So when we were growing up, we would constantly have at home, that our father was not there for long periods of time. He would be away at the border areas. When you're a young child, you don't really understand the magnitude of that. And whenever he would come home for vacations, like as we as Ramneeites go home for vacations, 2-3 months, he would come for 1 month, sometimes a little longer, to be with his family. And we would always see a cheerful smile on his face, and the pride with which I would say he, as well as all of our armed forces, serve our country, that is completely admirable. So I would say hats off to all of them who are out there protecting our country, protecting our borders. Now I just want to go back a little bit in history to see, why are we constantly having to defend ourselves? So let's go back a few centuries, in fact even back to 1100, 1200 AD, when India was ruled, you may have read in all your history books, under great kings such as Chandragupta Maurya, Ashoka, where India was called the Sone ki Chiriya, the golden bird. The reason for that is India's riches was so vast under those empires that the GDP of India was much higher than any of the countries in the world at that time. So we were a very, very wealthy and rich nation, and peace prevailed upon the land. So it was a very peaceful place, and therefore we have been able to develop so many different spiritual yogic practices. However, as the time went on, we were constantly under attack by all different dynasties that have come established in India in the 15th and 17th centuries, have taken away a lot of our riches. Some of them are still to be found in some, museums across the world. We can, even the Kohinoor diamond, which is the largest diamond in the world, belong to India. I have to say with a little bit of regret that the Cullinan diamond, which is now on display in the Tower of London Museum, actually, it was carved out by the Dutch company, the Royal Dutch Company. They actually cut and carved that diamond, and it belonged to the British Empire, because the then king of India, who succeeded to the British, had to give away his crown. A lot of riches, and I would say still we have the power of the spirituality which we carry forward. That is our great power, that we can carry out our independence with peaceful means, as we all are familiar with Gandhiji's life story, how he, as a person, has become an icon in the world for having a peaceful revolution. And even though, despite that, there were many, people have struggled for our freedom, which we must never forget. Various, stories abound, and as you have so beautifully depicted in today's, in today's performances, how our armed forces are constantly, being subjected to a lot of different pressure situations. So with that in mind, we should hold our independence and our freedom very dear to us. So just one word on what exactly is independence. Why should we value it? Why should we value our independence? It means that we can be free citizens in this country.
free to pursue our choices, free to voice our opinions, which back in the day may have been so difficult for pre-independence days, where the upper mall was only meant for the British people and the Indians had to walk on the lower mall road. So just some small things like this, which meant that we could not be truly free. And today we are free because of the sacrifices of all those people who are protecting our borders. So whenever you meet them, please greet them with utmost respect. And thank you so much today for having us here. And it was a delightful performance and my pleasure and honor to be here. Thank you.